Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of mains answer writing practice. And today's question is, why do we consider soil structure an important soil property for crop production? Why we consider soil structure an important soil property for crop production? So, in simply it is asking about the importance of soil structure in crop production. क्या क्या importance है soil structure की crop production में? And how is soil structure changed by various factors, that is factors affecting soil structure. So I have discussed this thing in detail in my agriculture optional course. अगर आप मेरे agriculture optional course पे जाते हैं, प्लेलिस्ट में agriculture optional पेपर 1 में जाएं, वहाँ पे मैंने डिटेल में सॉइल स्ट्रक्चर को पढ़ाया हुआ है, तो आप जाए तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने भी ये चीज़ वहाँ से पढ़ी हुई है, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी आसान होगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होगा सॉइल स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती है सॉइल स्ट्रक्चर को। सो अगर आपने नहीं भी देखे तो आप यहाँ से देखें, समझ जाएंगे आप अच्छे से क्या होती है सॉइल स्ट्रक्चर और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे वो फैक्टर्स जो अफेक्ट होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. So what is soil structure? It is arrangement of soil particles. Okay, we all know that has many particles such as sand, slit, clay, and organic materials. So it is the or arrangement of these particles with frequent pore spaces, कितने pore spaces हैं, and solids with proportion of pore spaces and solids. These also have a great factor on soil structure. So this is what soil structure is: arrangement of soil particles. And it is of different types. काफी types के हैं. Some famous types are granular. That is example like grains. These soil will be having this small grains. This is granular. We have platy structure. That is like plates. The structure will be like these plates. We have columnar structures. The structure will be like these columns. So these are different structures, or V structures etc. I just, for example, I have written here. So this is what soil structure is. Hope you understand this. Now moving to the body of the question. Why do we consider soil structure an important soil property for crop production? So what are the importance of soil structure that helps in good crop production? First of all, it improves air and water supply. एक गुड सॉइल स्ट्रक्चर में, जिस सॉइल स्ट्रक्चर में पोर्स एंड सॉलिड्स की प्रोपोर्शन जो है वो अच्छी होगी, इट विल हैव good air and water supply. We all know soil aeration is very important because roots also need air, roots also breathe, roots also need air for many purposes. Water supply, if pore space will be clear, will have good soil moisture there. It affects soil moisture. So a good soil structure improves air and water supply. It is, तो अगर अच्छे से वाटर और एयर सप्लाई रहेगी तो क्रॉप प्रोडक्शन ऑब्वियसली अच्छा होगा. गुड ड्रेनेज, a good soil structure should have good drainage. अगर अच्छी good drainage नहीं होगी, there will be problems of water logging and this will decrease our yield and this will have certain effects on our crops. So we need good drainage. Soil structure improves root penetration. A good soil structure will have good root penetration. The minerals, the nutrients will be absorbed by roots easily if you have good root penetration. It reduces erosion. A weak soil structure will be eroded. A weak structure will be eroded fast. So it also, good soil structure also reduces erosion. Ease of tillage. It will be easy for tilling a good soil structure. अगर आपका soil structure अच्छा है तो वहाँ पे टिलेज करना, वहाँ प्लो करना काफ़ी आसान रहेगा. और अगर कहीं हार्ड पेन्स बन गए हैं, soil structure अच्छी नहीं है, तो वहाँ टिलेज करना मुश्किल होता है. So these are some of the importance of soil structure. और भी importance हो सकते हैं जो कि crop production में helpful है, वो आप comments करके बताएं. Do comment other importance.
कमेंट्स करने से हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा और आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी. दैट्स व्हाई आई से इन एवरी वीडियो कमेंट क्या क्या और इंपॉर्टेंस हो सकते हैं. Now, moving to the second part of the question, that is asking how is soil structure changed by various factors, that is factors affecting soil structure. So first factor is climate, because climate influences the degree of aggregation in structure. Climate influences the degree of aggregation and structure. कैसी क्लाइमेट है, जैसे क्लाइमेट्स होंगे सॉइल एग्रीगेट्स भी वैसे ही होंगे, सॉइल स्ट्रक्चर वैसा ही होगा. फॉर एग्जांपल इन एरिड क्लाइमेट, in arid climate we will see that there will be little aggregation of primary particles, little aggregation of primary particles, there is low aggregation. So climate highly influences the degree of aggregation, and degree of aggregation highly influences the soil structure. So first factor is climate. Moving on, second factor is organic matter. It improves soil structure heavily, especially in sandy and clayey soil. सैंडी और क्ले सॉइल में जो है ऑर्गेनिक मैटर की काफी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ पे वो काफी मेजर रोल प्ले करता है. सैंडी एंड क्ले सॉइल में इट प्लेज अ मेजर रोल इन सैंडी एंड क्ले सॉइल in having a good structure. Tillage, it breaks large clods into smaller fragments, large clods into smaller fragments. So it has a profound impact on structure. Tillage can change the big particles of soil into smaller ones. Next factor could be plant roots and residues. Root hairs make soil particles cling together. जो रूट हेयर होती है वो बाइंडिंग या रूट्स जो होते हैं दैट हेल्प्स इन सॉइल बाइंडिंग. सो उससे इरोजन भी कम होता है और स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है. तो प्लांट्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड द रेसिड्यूज ऑफ प्लांट, रेसिड्यूज जो है ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं. रेसिड्यूज हेल्प्स इन ऑर्गेनिक मैटर एडिशन एंड इट ओवरऑल इन्हेंसेस द सॉइल स्ट्रक्चर. सो ये कुछ फैक्टर्स ये चाहते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज एनिमल्स. सच एज आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो बोरोवर्स का. बोरोवर्स make soil particles finer. अगर कोई बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो उसे बोरो करके उसे फाइनर पार्टिकल्स में चेंज करते हैं. सो एनिमल्स सच एज बोरोवर्स have great impact on soil structure. Moving on, microbes have great impact on soil structure, such as algae, microbes such as algae, fungi, bacteria, etc. They all help in keeping soil structure together, soil particles together. They help in keeping soil particles together, bind up करके रखते हैं. So they also highly influence soil structure and make it good. Fertilizers. High use of fertilizers has a bad effect on soil structure, such as high use of sodium nitrate. It destroys granulation. Sodium nitrate. By reducing stability of aggregates. Reducing जो है मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे सोडियम नाइट्रेट जो है वो ग्रेनुलेशन को डिस्ट्रॉय करता है और
Stability of aggregates is also reduced by it. So high use of fertilizers has bad impact on soil structure. Wetting and drying, another factor is wetting and drying. So through wetting and drying, cracks are developed, breaks are clods are breaks. Wetting and drying helps in breaking of clods. You will be easily seeing these big cracks in black soil. ब्लैक सॉइल में वेटिंग एंड ड्राइंग से बिग क्रैक्स को देख सकते हो एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ टिलेज. इतनी बड़े बड़े क्रैप्स आती है उसे सेल्फ टिलेज भी हम कहते हैं. सो वेटिंग एंड ड्राइंग हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सॉइल स्ट्रक्चर. Exchangeable cations has very much impact on soil structure such as, let me rub some part of it. I hope you understand this. Exchangeable cations has profound effects such as calcium and magnesium. Here through flocating, floating, it leads to good structure. Whereas sodium, high amount of sodium does deflocating, deflocation, which leads to poor structure. So exchangeable cations, which type of exchangeable cations are there, in which amount are there, in which amount they are there, it also impacts the soil structure. Next is the inorganic cations such as CaCO3, or you can say securicides. These also have profound impact on soil structure. Their amount for CO3 in good amount improves soil structure, but there are some cations that also decreases that leads to poor structure. So these are about some factors which will leads to which affect soil structure. I hope you all understand this. So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में. And if you like, do like, share and subscribe. On comments the other factors, और भी क्या क्या factors हैं आप उसे comments करके बताएं, और भी क्या क्या importance हो सकती है soil structure की आप उसे comment करके बताएं. So these things motivate us and for so that we can make more such videos for you. That's all for today. Have a nice day. Thank you.